let us understand the kinds of company. मतलब कंपनी कितने प्रकार का होता है. Broadly speaking, there are three types of company. Number one, private company. Number two, public company. And number three, one person company. तो हमने क्या देखा, कंपनी तीन प्रकार का होता है. एक होता है प्राइवेट कंपनी, दूसरा होता है पब्लिक कंपनी एंड तीसरा होता है वन पर्सन कंपनी. और यही तीन प्रकार का कंपनी सारा दुनिया में मिलता है देखने के लिए, नॉट सिर्फ इंडिया में बट पूरा दुनिया में यही तीन प्रकार का कंपनी होता है. सो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन दिस थ्री टाइप्स ऑफ कंपनी. Number one, the first difference, number of owners and shares. In case of private company, the minimum number of members should be 2 and the maximum should be 200. That means in case of private company, एक private company starting करने के लिए minimum number of members shall be 2. It cannot be less than 2 and maximum number of members shall be 200 and it cannot be more than 200. In case of public company, the minimum number of members shall be 7 and the maximum, it does not have no maximum limit. That means minimum number shall be 7. इसके नीचे नहीं हो सकता है members in case of private company. Maximum number किसी भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकते हैं members. जैसे कि हम देख सकते हैं कि रिलायंस इंडिया और टाटा कंपनी और सीटीएस कंपनी एक्सेट्रा जितने भी सारे पब्लिक कंपनी होता है, बड़ा बड़ा कंपनी होता है और गवर्नमेंट पब्लिक लिमिटेड कंपनी जैसे कि राइट्स लिमिटेड, बहुत सारे मेंबर्स होता है. वन पर्सन कंपनी, तो वन पर्सन कंपनी का मेंबर कितना होगा ये उसका नाम में ही छुपा हुआ है. सो द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ वन पर्सन कंपनी shall be one only. Number of directors or managers and managers. In case of private company, the minimum number of directors or managers shall be 2. It cannot be less than 2. And the maximum number shall be 15. It cannot be less than 15. In case of public company, the minimum number of directors shall be 3 and the maximum shall be 15. That means it cannot be less than 3 and it cannot be more than 15. And in case of one person company, the minimum number of directors shall be 1 and the maximum is 15. That means it cannot be less than 1. That means it cannot be 0 and it cannot be more than 15. Paid up capital. In case of private company, at least in case of private company, the paid up capital should be at least rupees 1 lakh and more. That means it cannot be less than rupees 1 lakh and but it can be more than any amount, but it can be more than rupees 1 lakh. That means it can be any amount more than rupees 1 lakh. In case of public company, the minimum paid up capital should be at least rupees 5 lakh and more. That means it cannot less than rupees 5 lakh and it can be any amount above rupees 5 lakhs. And in case of one person company, the minimum paid up capital shall be rupees 1 lakh only. Transfer of shares. In case of private company, the transfer of shares are not prohibited, but it is restricted by the articles of association. मतलब होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर ट्रांसफरेबल अलाउ है, but it is restricted by the articles of association. If the articles of association of the private company allows the transfer of shares, then a private company can transfer its shares, but it is not restricted or prohibited. In case of public company, the shares are freely transferable, and in case of one person company, since there is only one member, so there are no question of share transferability. Subscription of shares. In case of private company, the shares cannot be offered to the public. So in case of private company, the shares are transferable only between the members of the company. But in case of public company, the shares are offered can be offered to the public openly through the share market. जैसे कि हम देख सकते हैं बड़े बड़े कंपनी जैसे कि रिलायंस लिमिटेड, टाटा ग्रुप, सीटीएस, टीसीएस, राइट्स लिमिटेड जैसे बड़े बड़े कंपनी में shares are openly available for purchasing through the share market. And in case of one person company, it is not applicable. Subscription of it is not applicable. Name. In case of private company, the word private limited is used as a part of the company's
name. In case of public company, the word limited is used as a part of the name, and in case of one person company, the word OPC is used as a part of the name. For example, in case of private limited company, suppose that High-Tech is a private limited company. So here the correct name of the High-Tech will be High-Tech Private Limited. The word private limited is attached after the name of the company. And in case of limited company, suppose that Rights is a limited company, so the name limited, that is Rights Limited. So the correct name of the company will be Rights Limited. So the word limited is attached after the name of the company. Similarly, in case of one person company, suppose that Sham is a one person company. Here the correct name will be Sham OPC. That means the word OPC is attached after the name of the company. अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी, कितने प्रकार का कंपनी होता है. There are three types of company: unlimited company, limited by guarantee, and limited by shares. In case of unlimited company, the members have unlimited liability. Practically, this type of company does not exist in India. Limited by guarantee, where the in case of this type of company, the liability of the members is limited to the amount of guarantee given by them. Limited by shares. In case of this type of company, the liability of the members is limited only to the amount of the unpaid portion of the shares. Incorporation of the company. अब हम जानेंगे कंपनी कैसे तैयार किया जा सकता है, किया जाता है. So the steps of the formation of a company, also known as incorporation of the company. These steps or process of incorporating a company can be divided into 4 stages. A. Promotion. A person or a group of persons agreed to start a business in the form of a company. These persons are called promoters. So कंपनी शुरू करने से पहले कुछ पर्सन इनिशिएटिव देता है एक कंपनी को तैयार करने के लिए. वो सब प्रोसेस, जितना सारे कागजात लगता है, जितना सारे लीगल प्रोसेस होता है, वो सब डिसीजन लेकर तैयार करता है. ये सब उन लोगों को कहते हैं प्रोमोटर्स. So the promoters is a person or a group of persons who agreed to start a business in the form of a company. These persons are called promoters. Number B, incorporation or registration of a company. In India, a company is incorporated following the procedure prescribed in the Companies Act 2013. तो इंडिया में एक नया कंपनी स्टार्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसीडियर, मतलब लीगल प्रोसीडियर, मतलब जरूरत होता है, कानूनी प्रोसीडियर जो जिसका जरूरत होता है, वो सब कंपनीज एक्ट 2013 में स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है इन डिटेल्स. इन द फर्स्ट स्टेप, द रजिस्टर ऑफ द कंपनी अप्रूव्स द नेम ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी. पहले तो उन प्रोमोटर्स को कंपनी का एक नाम ठीक करना पड़ता है, और नाम ठीक करने के बाद वो उस नाम को कंपनी का क्या नाम होगा वो बता देता है रजिस्टर ऑफ कंपनीज को. After that, the register of the companies will decide whether it is going to approve that name or not. In the second stage, the promoters submit memorandum of association, articles of association, and the consent of the first directors, and a declaration that the company should comply with all the provisions of the Companies Act. इसके बाद प्रोमोटर्स को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन तैयार करना पड़ता है कंपनी का, प्रपोज कंपनी का, और कुछ फास्ट डायरेक्टर्स अपॉइंट करना पड़ता है, और उन लोगों का कंसेंट भी लेना पड़ता है कि वो दोज पर्सन्स आर एग्रीड टू एक्ट एज अ फास्ट डायरेक्टर. उसके बाद वो ये सब कुछ डिपॉजिट करता है, भेज देता है रजिस्टर ऑफ द कंपनीज के पास. और इसके बाद उन लोगों को एक डिक्लेरेशन भी देना पड़ता है प्रोमोटर्स को दैट द कंपनी शुड कंप्लाई विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट. मतलब अगर कंपनी तैयार हो जाता है, कंपनी का अप्रूवल मिल जाता है, तो while at the time of conducting the business, the company will comply with all the provisions as given in the Companies Act 2013. उसके बाद आता है तीसरी धाप, थर्ड स्टेज. If the registered is satisfied that all the provisions of the Companies Act are duly complied, then he issued a certificate of incorporation. तो अगर रजिस्टर को सब देखकर ऐसा लगता है कि the company एक अच्छा कंपनी है, ये and the company if any the approval is given, then the company will conduct the business in a fair way,
Then the register approves the incorporation of the company and issued a certificate of incorporation to the promoters. उसके बाद होता है स्टेप सी, capital subscription. Within 180 days of its incorporation, the company has to obtain a commencement of business certificate. A public company has to issue a document called prospectus in which terms and conditions of the issue are stated, along with the proposed purpose for which the proceeds from the issue of shares or securities will be issued. तो सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन रजिस्टर ऑफ द कंपनीज की रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास से सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन मिलने की 180 डेज के अंदर अंदर द कंपनी हैज टू ऑब्टेन अ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट. First of all, as we see in the third stage, if the registrar is satisfied with all the provisions of the Companies Act, then he issued a certificate of incorporation. And after getting the certificate of incorporation, within 180 days, the company has to obtain the commencement of business certificate. मतलब 100 certificate of incorporation मिलने की 180 दिन के अंदर अंदर the companies have to obtain the commencement of business certificate. मतलब business कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं. इसका एक बिजनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए, कलेक्ट करना पड़ता है कंपनी को. अ पब्लिक कंपनी हैज टू इशू अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड प्रोस्पेक्टस. एक पब्लिक कंपनी जो होता है उसको एक प्रोस्पेक्टस तैयार करना पड़ता है और उस प्रोस्पेक्टस में डिटेल्स में देना पड़ता है ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इश्यूज along with the purpose for which the proceeds from the issues of securities are issued. मतलब कंपनी को अपने एक प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है. प्रोस्पेक्टस में इन डिटेल्स ऑल सभी टर्म्स एंड कंडीशंस देना पड़ता है और बताना पड़ता है कि वो जो शेयर इशू करेगा और इशू करने के बाद शेयर इशू करने के बाद जो रुपया मिलेगा उस रुपये से वो क्या करेगा. Commencement of business. The company has to obtain a submit of declaration that every subscriber to the memorandum of association has paid the value of shares agreed to be taken by them. तो उसके बाद फाइनल स्टेज में कंपनी का एक और डिक्लेरेशन देना पड़ता है. उसमें कंपनी को बताना पड़ता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जितने भी सब्सक्राइबर है वो सब पूरा शेयर का जितना वैल्यू होता है पूरा दे चुका है.